Yesterday, on the 28th of May, a very strange occurrence has happened in village Bhatanpal. This is in Raigarh. There's a jute factory on which the police station is there. Over here, there was a man whose name was Nirmal Sarthi. He used to live with his two sons on his own field, on his own plot. Suddenly, his condition started deteriorating and his physical health was going down badly. He came across some Baba, and that Baba told him that you make a room over here and pray daily with your gods so that you will be cured. He had already taken a lot of medical assistance and everything, so he constructed a room, and for about 3 years he kept on praying over there. And it was a vacant room. There was no idol placed. It was never made into a mandir or anything. And there he used to pray, and he kept on praying, but unfortunately he was not cured. And luckily, one of the pastors who was passing by, he saw him and he just went and prayed for him, and this happened 2 or 3 times, and by the prayers of that pastor he was totally cured. There was a program given by the honorable prime minister to make houses for all the poor people. Under that scheme, he wanted to construct a house in his own plot over there, for which he called a bulldozer. He just dismantled the small room what he had made over there, and he wanted to construct a house under the prime minister's housing policy. He started constructing on his own plot adjacent to the room what he had made. He started constructing a church, and he used to regularly go there with his family and with his children. There was no pastor, nobody ever went to him, no conversion or anything was done. That was the fact. I will be playing you the clip what I received. मैंने बोल दिया है वहाँ पे। अब देखो कब तक वकील भेजते, क्या करते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी तो वहाँ पर बहुत भीड़ था सर, हम लोग को जाने नहीं दिए। वो बजरंग दल वाले किसी को जाने नहीं दे रहे थे अंदर में। वो एक्चुअल कहानी क्या है यार, वो मैं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। वो निर्मल कर बनवा रहा था ना? हाँ, निर्मल सारथी बना रहा था पहले, ये में था तो पूजा पाठ कर रहा था घर में। तो फिर बाद में फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, तो मंदिर भी नहीं बन पाया, अधूरा हो गया। हाँ। और ये फिर मसीह को चालू कर दिया दुआ प्रार्थना करने। 3 साल हो गया मसीह में आए उसको। हाँ, खुद ही वो किया ना, कोई गया तो नहीं? हाँ, खुद ही किया। नहीं, खुद ही किया है। मेरे को भी वो लोग जब उनको कहा, उसका बहन से संदेश भी पहुंचा, तू तो सब कुछ कर चुका है, एक बार इसमें एक बार करके देख बोल के। तो फिर ये लोग मेरे को बुलाए थे। अच्छा। मैं फिर जाकर उनको शिक्षा दिया उनके घर में। फिर 3 साल से दुआ प्रार्थना करते आ रहे हैं। तो और वो अपनी मर्जी से वो अपना इसमें आया है, ईसाई धर्म मानता है बस? हाँ, अपने मर्जी से सर वो। हाँ। और अच्छा, उसने जो है निर्मल कर है, वो खुद ही तो उसने जैसे भी बोला के वो तोड़वाया है? हाँ, दूसरी बात है। नहीं, वो खुद ही ना, मतलब अभी घर वर आया था उनके पास, घर बनाने के लिए आवास योजना के थ्रू में। तो फिर आने वाला था, तो लोग गड्ढे वड्ढे खोद लिए थे बीम वगैरह के लिए जी। तो रास्ता वास्ता करेंगे बोल के ना, वो फिर उसको गिराए सर। इतना 3 साल हो गया इसको भी, अब क्या रखेंगे बोल के ना, वो लोग उसको जेसीबी ला करके उसको गिरा रहे थे। अच्छा। तो गिरा दिए, तो फिर वो बजरंग दल वाले ना और कुछ सरदार। अरे भाई, तो जमीन उसकी वही तोड़ रहा है, तो तीसरे आदमी को, बजरंग दल को क्या आपत्ति हो गई उसमें? हाँ सर, हाँ, उसका कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें मूर्ति भी नहीं रखा गया था, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अधूरा था। चलिए, अब करते हैं। अब यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आईजी साहब अब फोन नहीं उठा रहे। मैं भी फोन किया था। वकील की मदद हमने कर दी है, हम लोग भी खुद यहाँ परेशान है, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आसपास के लोगों को फोन करिए, थोड़ा जाए वहाँ पे, देखें क्या कर सकते हैं। क्या भाटनपाल ये कहाँ पे पड़ता है? तहसील कौन सी है? तहसील पुसौर है, भाटनपाली का, जिला रायगढ़ पड़ता है। ये उड़ीसा रोड जो है आता है, नेशनल हाईवे 14 एंड उड़ीसा रोड जी, उसी के बगल में है सर ये गांव। हाँ। रायगढ़ से सिटी से कम से कम 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, वो जो जूट मिल है भाई, उसी के पीछे है ना? हाँ, जूट मिल थाना पड़ता है, थाना जूट मिल है। देखिए, अब करिए क्या होगा। अब जो कुछ भी है कानूनी मदद जो है इधर से कर रहे हैं। वहाँ रायगढ़ में हमारा संगठन होने से अभी तक तो सब पहुंच गए रहते लोग, पर वहाँ संगठन नहीं है अपने अभी। तो देखिए, अब करते हैं कोशिश, जो कुछ बनेगा, है ना? ठीक है सर। हाँ, तो वकील वगैरह का व्यवस्था कैसे हो कर पाएगा? तो रहा हूँ यार, अब यहाँ से बैठे रायपुर से जितना कुछ मेरे से बन रहा है मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, अब करते हैं जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, बताइए सर। हाँ।
Suddenly, in the evening, about 1,000 people belonging to all saffron vandals, they descended onto his house and started beating him and whatnot. As usual, you know what happens. And he was beaten thoroughly. His children were beaten. The police was called. And then their major problem was that why did you construct a church over here? And then he said that how the room which he had constructed, that was a mandir. May I give you for your information, that was not a mandir. No idol was ever placed. It was never offered to the gods. Any sort of public prayer was never conducted. So it was not a mandir. No idol was placed over there. And he wanted to only dismantle the room and construct his own house. And now these people have come that Christians have destroyed a mandir and the huge attack is taking place, which you can see on my video and everything. This is the type of democracy we have. He has been arrested, the owner of the land. His sons have been arrested. For the whole night they have kept him in the police station. The police is taking no action. And may I ask, what action is the police taking? What is his crime? He cannot construct a house in his own plot. He cannot construct a church if he wants to. He cannot construct a mandir if he wants to. He has to follow the dictates of such vandalism. It's a very sorrowful situation our country is passing through. We hope people will look into this and understand that democracy in India today stands at the crossroads. I thank you all very much for having heard to me. Kindly bear with us.